Okay, just a second. I'm just turning on the PPT. Okay, friends, will you please confirm me? Are you able to see my screen? I'm sharing my screen with you. Yes, we are able to see. Okay, great. So, are you able to see the PPT in presentation mode? Yeah, VBA Foundation. Yeah, okay, great. Just a second, there is one student joined. Hi, Naneshwar, good evening. Yeah, Naneshwar, am I audible to you? Yes, sir. Okay, great. Hello. Yeah, okay, so let's get started. Just confirm me, everyone is able to view my screen into presentation mode. Hello. Yeah, hello. Yes, sir. Naneshwar this side. Sorry. Hello. Yeah, Naneshwar this side. Naneshwar. yeah, Naneshwar. Am Am I I? audible to you? Yes, you are audible to me. Yeah. Yes. Okay, Thank you, sir. Yeah. I can see your screen. okay, fine, great. Okay, friends, just a second. Okay, friends, good evening to everyone. My name is Hussain Patan, and I will be your trainer for VBA Foundation batch, and I'm holding 14 years of industrial experience. So, this would be the agenda for the day. That's introduction, what is VBA and why should we learn, course information, and payment mode. So let's start up with the introduction part. So as I have introduced myself to you, uh, I would request you to please introduce yourself. And before introduction, I would just need a small confirmation from you that all of you are comfortable with Hindi and English language. Yes, I'm comfortable both with English and Hindi. Okay, fine, great. What about others? Yes, both. No problem. Yeah. Yes. Both languages, sir. Okay, fine. So I would request you to please introduce yourself one by one. Okay, hi everyone. My name is Sandeep Yadav. Overall, I am having around 10 to 12 years of experience in BPO, IT, and consulting. I'm looking forward to join this class to enhance my further skills, especially on VBA. Uh, Currently, I'm working on Excel and other base applications, but I'm looking more into the VBA side from a process optimization point of view. So that's Okay, all from my side. okay, that's good, Sandeep. So next one. Hello, sir. My name is Naneshwar Kandirkar, and currently I'm working in a PRJX, a private limited. Uh, my whole work is depending on the Excel application, depending on Excel application actually. So I wanted to enhance my knowledge in Excel, and I'm looking forward to the macro level VB, like Okay, micro level. Yeah. yeah, nice meeting you, Nyaneshwar. So I would request Samir to go ahead. Yeah, Samir here. I have total 10 years of experience in accounts, and now I'm working in PRGX. Same with Naneshwar. Naneshwar also my friend, one of my friend, and I'm looking here to get knowledge for VBA for in better Excel work in my current organization. Okay, great. Bharat, Mm. yes, Bharat, will you please introduce yourself?
Bharat, you're on a mute. Will you please unmute yourself and introduce yourself? Oh, Bharat has left. Okay, fine. No worries. So we will continue. Yes, adding to one point, I have completed my advanced excel from AFC technologies itself Okay, so Naneshwar is an manufacturing side. existing student. Yes, So yes. what about Sandeep and Samir? I am new. Okay, you are new. Okay, fine. So what I will do first of all, I will just take you through the our Uh, Hi, yeah. sir. Oh, I have one question. Hmm. Can we have this recording as well for every lectures recording? Sorry, we do not provide recordings for each and every lectures. We only have a recording for the demo sessions. We do not provide recordings for each and every session. There is a particular reason behind it. The reason is if we provide the recordings, students do not pay attention towards the live classes and they bunk the classes. To avoid all those scenarios, we are not providing any sort of recordings because it makes students lazy because it's a Sunday batch and it's into an evening. So there might be lot of possibility wherein due to the personal work of the students they might bunk the classes. So to avoid all those things and to get an 100% attendance as well as students should gain 100% knowledge after attending this session. So for that purpose we are not providing any sort of recordings. Okay. So if you have any sort of doubts, queries, any means concerns, you may just have a word into the live classes. We will be helping you out in rectifying and answering those questions. Okay. 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 So let me take you through the AFC case first. What is AFC case? Once you log in into the Google, just type over there AFC case. You would get the first link, AFC case technologies one. So this is the homepage of our institute. So over here you can see we have started our journey since 2010. So we are into this industry from past 14 years and we have been providing n numbers of courses. If you click on this course information, you would find the courses that we are offering as well as we provide the specialization courses into advanced VBA using class module and SQL, practical application of data science using Python, as well as Excel Access and SQL Server with VBA level 2. And these are the entry level courses. That's Advanced Excel VBA Foundation Batch. Then it's developing mobile, tablet, web using Power Apps pages. Then Power BI, Power Query, Power Pivot. Then Power Automate. N numbers of courses we provide over here. Even SQL, one of the most trending courses into the market. Python, all we provide over here. And when you click on this home page, firstly, I would just tell you about the full form of AFC case. If you see over here, just a second, I will just refresh this page. Okay, so AFC case technology stands for achieving freedom by creativity and knowledge sharing. It means that whatever knowledge our trainers are having, we make sure that we share our knowledge to all the students so that they could develop their skills, grow into their career, and help others too in growing into their career. And when you scroll down, you will find that there are query solving groups on Telegram. I would strongly recommend you to please join this group and help the other users in solving their queries. इसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ आपको
अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन करते हो एंड जो भी यूजर्स उस ग्रुप में है आप उनको हेल्प आउट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नॉलेज है वो आप एनहांस करते हो, एज वेल एज यू कम टू नो कि किस तरीके के रियल लाइफ चैलेंजेस यूजर्स डे टू डे लाइफ में उनके फेस करते हैं। And apart from this, we also have a group for job opportunities, wherein you can join this group. Where there are almost now 4K users into this group, wherein our existing students post their job opportunities into their companies, and you can grab those opportunities too. If you think that the job posting is suitable for your requirement, then you can grab those opportunities. Okay. So any queries towards it? Yes, yes. Yes, guys, any queries towards it? No, Okay. So no, one no. more thing No. over here is once you take an admission, you would have to create your own user ID password. After clicking on this login page, you have to follow these guidelines written over here, so that once you create your username, user ID password, you would be getting an access for the notes. So I will just show you. Since we are on this page of AFCKS, I'm completing this part first. So this is how the user uh, login would be there for students, wherein you can download the notes over here. Whatever courses you have joined, you will be getting an access for all those courses. And after clicking on this plus button, you would be getting the notes over here. So you can download the notes and do the practice. Hope this is clear to everyone. Any questions towards this part? No questions. Okay, let's go back to our PPT. So before going back to the PPT, we have two joiners. One is Rasika, other one is Ganesh. So I would request Rasika and Ganesh to introduce yourself, as well as Bharat has also joined. So Bharat, Ganesh and Rasika, will you please introduce yourself? Myself is Hello. Bharat. Hello. Yeah, I would request. Rasi- I would request Bharat to go first because alphabetically order we can go through. Myself is Bharat. Basically, I have joined AFC case very early, around you can say Corona time. That time I have come to Pune office for learning VBA. Thereafter Corona के बाद I have joined online. I have learned VBA from Raja sir and Pankaj sir. Around you can say around 2 years earlier. Now I want to learn again the BBA, so I have joined this batch. So any particular reason that you want to learn the VBA course again, or you could not Um, complete that course? no, I have completed the course because now I am moved from payroll to MIS team. So I think so VBA will be very helpful in my day-to-day life. That's why I'm joining again VBA. Okay, fine, great. Okay, so next I would request alphabetical order. It's Rasika. Hello. Good evening. I'm Rasika Gulabaksore, and I'm doing currently doing job in Bajaj Allianz Life Insurance. I want to do the VBA because of there is so many tools used in the MIS team in Bajaj. They are used of VBA and Python as well as SQL. That's why I want to learn the VBA. It will be helpful to me, useful for me to automate the mail and also for the consolidation of the sheet. Okay, that's good. Uh, are you aware about the AFCKS Institute? Uh, yes, I heard from my team. Okay, great. And Ganesh, will you please introduce yourself? Uh,
Good afternoon, sir. My name is Ganesh. I'm basically working in a private sector, basically it's NGO Private Limited. I have to learn the VBA to enhance my skill and to automate my daily task. That's the reason I want to learn the VBA. Okay, so are you existing student of AFCKS? No, no, sir. I first time joined. I heard from this from website. Okay, fine, great. Okay, so my name is Hussain. I'm holding 14 years of industrial experience and I will be your trainer for this VBA foundation batch. Okay, Okay, sir. yeah, fine. So let's move ahead. What is VBA and why should we learn it? Okay, so before moving to the next slide, as all of you are an experienced person, so will you please let me know what is VBA or what is VBA and macros? We yeah, VBA is a programming we language, and we through stand we for can. Yeah, basic any application. yeah, I would request you to speak one by one. Otherwise, there would be a conflict. Yes. Will you please go ahead? Any one of you, Naneshwar or any one of you? Yeah, VBA stands for Visual Basic Application, and macro is where we record the script in that way. But there is a VBA tab, we Hmm. can say module kind of things. We Right. write a script, we call it as macro, we call it as micro. That's it. Whatever we record, and once we run that program, we will get the output, what we have given the input in that sheet. That's great. That's great. Anybody would like to share their opinions or input or any add-on points? So VBA is a basically is a programming language. Through we can write the small code and we can use that code repeatedly or multiple times to achieve our goals. Okay. How many of you are from non-IT background? Like, uh, Myself. okay, one. Yeah, my Yes. Sandeep. Okay, Sandeep, Naneshwar. Okay, Uh, Samir. Samir. Okay. What about Rasika, Bharat? No, I'm from the technical. You're from the technical. Okay, fine. Okay, so when Naneshwar told that this is a programming language, did you thought कि अरे ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सो हम कैसे करें एक सेकंड के लिए आपने सोचा ये चीज All right, when it हाँ comes सर. to a word like VBA and something like that, right, it always comes in the mind that there might be something programming language or something kind of technical language will be used, right? So it's a yes common comes in the mind. right so over here let's move on to the next slide so as you said that VBA stands for Visual Basic Application okay it's designed and developed by Microsoft then works with all office application built in Excel no additional application required it is used for automating the task and it's a project oriented language one of the easiest coding language to learn okay so let's talk one by one about all these things अगर आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कोडिंग है तो हम किस तरीके से सीख लेंगे सो यू डोंट नीड टू फियर अबाउट इट अगर आपके दिलो दिमाग में अगर ये डर है तो सबसे पहले तो वो डर निकाल दीजिए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज है सिंस यू आर इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम मेनी इयर्स आपका एक्सेल पे तो हैंड्स ऑन अच्छा खासा हो चुका है तो आप जो एक्सेल में करते हो वही सेम चीजें आपको लिखनी है लेकिन लिखने का एक पैटर्न है उस पर्टिकुलर पैटर्न में ही आपको लिखना है जैसे हिंदी हमने लैंग्वेज सीखी इंग्लिश हमने सीखा मराठी हमने सीखा एंड इन मेनी अदर लैंग्वेजेस वी लर्न सिमिलरली ये भी एक लैंग्वेज है जो हमको हम जो टास्क करते हैं हमको बस उसको लिखना है कि
ये जो एप्लीकेशन है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, हम एक्सेल में करने वाले हैं। तो एक्सेल से आपको क्या करवाना है, वो बस आपको लिखना है, लेकिन उसका एक पैटर्न है, उसका एक तरीका है, उसी हिसाब से हमको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम आपको क्लास में सिखाएंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, कोडिंग। एंड एज आई हैव सेड यू, दिस इज डिजाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस में, even Outlook, sorry, I have missed Outlook, one of the most important application in our day to day life, जहाँ पे हम emails रिसीव करते हैं, भेजते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस में ये लैंग्वेज यूजफुल है एंड इसका लिखने का पैटर्न सेम है। ठीक है, तो अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हो तो इसका आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि एमएस ऑफिस के जो भी एप्लीकेशन है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो सीखने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली टू दी एक्सेल, बिकॉज हम हमारा जो टास्क है वो 100% एक्सेल में ही करता है, क्योंकि हमारे जितने भी रिपोर्टिंग का टास्क है वो सब कुछ एक्सेल में होता है। तो एक्सेल के थ्रू ही हम सब कुछ हमारा रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम इसमें एक्सेल में ज्यादा फोकस रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड एज वी हैव सेड कि नो एडिशनल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। जब आप एमएस ऑफिस का लाइसेंस लेते हो तो उसी के साथ इनबिल्ट ये फीचर आपको मिलता है, दैट इज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इसलिए आज के डेट में भी इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है, बिकॉज अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो उसके साथ अगर आपको इनबिल्ट जो फीचर मिल रहे हैं आप उसी को एक्सप्लोर करोगे, rather than investing crores of rupees in third party softwares. Right or wrong? Yes friends, am I right? Yes, sir. अगर आप Yes, एक right. लाइसेंस, अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें अंदर, उसके अंदर अगर आपके पास ऑटोमेशन का कोई फीचर है आप उसी को एक्सप्लोर करोगे, राइट, rather than investing crores of rupees in third party application. तो कंपनीज भी यही चीज सोचती है। अगर आप कंपनीज में देखोगे तो कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन होता है जिसके अंदर उनको इनबिल्ट फीचर मिलता है। तो इसलिए कंपनीज क्या चाहती है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने स्किल सेट को इस तरीके से डेवलप करें सो दैट जो एप्लीकेशंस के अंदर जो इनबिल्ट फीचर्स है उसको वो एक्सप्लोर करके अपना जो डे टू डे एक्टिविटी है उसे सिंप्लीफाई करें। तो ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। सीखने के दो तरीके हैं, एक तो आपका सेल्फ लर्निंग है, दूसरा आप क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हो। लेकिन सेल्फ लर्निंग में एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको कोई डाउट्स, क्वेरीज आते हैं तो वो अटेंड करने के लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिलता। आपको काफी सारा रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है जिसमें काफी सारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल टू ज्वाइन अ क्लासेस, बिकॉज क्लासेस में क्या होता है, इन डेप्थ नॉलेज शेयर किया जाता है, आपके जो क्वेरीज होते हैं उसे रियल टाइम बेसिस पे अटेंड किया जाता है एंड उसको सॉल्व किया जाता है जब के तब, सो दैट आपका जो एक्सपोजर है वो आपको क्लियरली पता चलता है कि मेरा लिमिटेशंस क्या है, मैंने क्या गलती किया था, अब इसको किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है या फिर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप जब लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे काफी इफेक्टिवली उसको आंसर किया जाता है एंड सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एंड एज आई सेड कि एज ऑल ऑफ यू नो कि ऑटोमेशन के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। एज यू नो आज का जो ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्रीज में वो ये है कि सब लोग हार्ड वर्क के जगह पे स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। व्हाई द रीजन इज स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज आज का जो कल्चर है वो हार्ड वर्क को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, rather than दी स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क को सबसे ज्यादा आज के डेट में वैल्यू है, बिकॉज अगर इफ यू आर वेरी स्मार्ट इन हैंडलिंग द थिंग्स गिव एंड प्रेजेंटिंग दी योर रिपोर्ट्स इन अ शॉर्टर टाइम, वो सामने वाला जो यूजर है वो उसको और काम फास्ट करके और अच्छे से उसको प्रेजेंट करके मैनेजमेंट को
टाइम के पहले अगर रिपोर्ट मिल जाती है सो दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में उनको हेल्प आउट होती है। इफ वी स्टॉप अबाउट 30 years ago 1980s 1990s में, उस टाइम पे लोग ज्यादा फोकस थे टूवर्ड्स हार्ड वर्क, लेकिन आज के डेट में लोग ज्यादा फोकस है टूवर्ड्स स्मार्ट वर्क। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क? Yes, friends. Yes, 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 sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. So, will you please help me out to know what is hard work and what is smart work? I think a person can spend hours and hours to deliver the same work in so much of time, where we can have smart things to play and built in a tool to get the same work done in a very short span of time, and that to giving more. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट बनाने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम लगता है, एंड उसी जगह पे अगर आपने वीबीए डेवलप करने के लिए 2 से 4 घंटे का टाइम इन्वेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट जो 2 घंटे का रिपोर्ट है वो अगर आपका 10 से 15 मिनट में बन रहा है, तो आपने जो 4 घंटे या 2 घंटे आपने वीबीए डेवलप करने में जो लगाए हैं, उसका तो पूरा सेविंग्स तो आपने लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो उसका तो पूरा टोटली एडवांटेज है, राइट? अगर आप 2 आवर्स का काम अगर 15 मिनट्स में कर रहे हो तो आपके पास ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का स्पेयर टाइम बच जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 105 मिनट का स्पेयर टाइम बच जाता है। तो वो स्पेयर टाइम में आप क्या करोगे, एक तो आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या फिर नया बिजनेस लोगे। तो इससे क्या होता है ऑटोमेट करने से कि एक तो आपके स्किल सेट डेवलप हो गए, आपका जो काम का स्पीड है वो बढ़ गया, अलॉन्ग विद दैट यू गेट इन न्यू बिजनेस। वंस यू गेट इन अ न्यू बिजनेस, ऑब्वियसली आपका जो कंपनी में वेटेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब नया बिजनेस आता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एम्प्लॉय के एफर्ट्स की वजह से, अगर जब भी नया बिजनेस आता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड थिंग्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डू यू एग्री टू माई स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. So Yes, this sir. is the reason why we should learn all these automation tools. ओके, तो शुरुआत आप VBA से कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके एनालिटिकल थिंकिंग्स को आप यूज कर सकते हो, एंड जो टास्क आपने सालों ना सालों एक्सेल पे करते आए हो उसी को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज या सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, so next is why should I learn VBA? So why should we learn VBA? So first thing is to automate the task. फिर उसके बाद VBA will give you a path to learn the programming language. आज अभी आपको एक्सेल आता है, सो आज आप क्या सोच रहे हो कि मुझे आज एक्सेल आ रहा है, तो एक्सेल के बाद क्या? यू आर नॉट स्टॉपिंग समवेयर, राइट? यू आर थिंकिंग कि यस आज मुझे एक्सेल आ रहा है, तो एक्सेल के बाद क्या? VBA। VBA के बाद क्या? SQL। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड करोगे आप, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, राइट? तो उसी तरीके से आपको नया नया एक्सपोजर मिलने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Absolutely right. नेक्स्ट इज Yes, sir. इट्स अ वाइडली यूज एप्लीकेशन, वाइड एप्लीकेशन। एज यू नो कि MS ऑफिस तो हर एक कंपनी में होता ही है, एंड एज आई हैव सेड यू कि ये बिल्ट इन फीचर है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है। जितने बार भी एक्सेल ओपन होगा VBA आएगा यूज में। नेक्स्ट इज इजी टू लर्न। एज आई हैव सेड यू, आप डे टू डे बेसिस पे जो एक्सेल में काम कर रहे हो वही सेम चीज आपको VBA के थ्रू करना है। अभी एक्सेल में भी आपने इनिशियल डेज पे आपने स्ट्रगल किया होगा। एक्सेल में काफी सारे जो फंक्शंस है, जैसे कि सम फंक्शन हो गया, वी लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, इफ फंक्शन हो गया, ये सीखने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया होगा, राइट? यस Yes, sir. फ्रेंड्स। एंड जब Yes. जब आपने उसको सीखा, तो नाउ यू आई थिंक यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आपके जो जूनियर्स होंगे, जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, आप उनको 100% हेल्प आउट करोगे वो पर्टिकुलर फंक्शंस को सीखने में, समझने में, राइट?
You can be a mentor to them. Correct? Correct. Yes. उसी तरीके से जिस डेडिकेशन से आपने एक्सेल सीखा था, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि उसी डेडिकेशन से आप VBA भी सीखिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज एंड आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन लर्निंग दिस लैंग्वेज. मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने मुझे 100% आपका टाइम दे दिया, वीक का जो 3 आवर्स है, अगर आपने मुझे आपका 100% 3 आवर्स दे दिया, नोट make a note of it कि after 4 months down the line you would be in a position to write your own codings without anybody's help. So my strong recommendation for you, since it's a Sunday batch, yes, समझ सकता हूँ कि हफ्ते में हमें एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें भी 3 घंटा हम लर्निंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम ऑफ 4 months. So I would strongly recommend you कि डेडिकेशन से बस मुझे 3 आवर्स देना एवरी क्लास में, हफ्ते के 3 आवर्स, more than enough, and just do some self learning in your remaining time. 4 months down the line you would be in a position to learn and you can be a mentor to others कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहने के बावजूद भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली. दैट वुड बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स and motivation to others to learn the things, because कई दफा लोगों के दिमाग में रहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउ कुड वी लर्न इट, मेरे बस की बात नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आपने डेडिकेशन दिखाया तो डेफिनेटली यू कुड बी द मास्टर इनटू इट, एज यू माइट बी द मास्टर इनटू एक्सेल, बिकॉज आप एक्सेल काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे हो. तो सिर्फ मेरे साथ कॉपरेट कीजिए, आपका डेडिकेटेड टाइम मुझे दे दीजिए, डेफिनेटली यू वुड बी दी एट अ विनर सीट 4 months डाउन द लाइन. वंस यू ऑटोमेट द टास्क, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, आपका टैट रिड्यूस होता है. टैट यानी कि टर्न अराउंड टाइम, आपका टाइम रिड्यूस हो गया. आपका टाइम रिड्यूस हो गया मतलब आपने कंपनी का पैसा सेव किया. आपका टाइम रिड्यूस हो गया, कंपनी का पैसा सेव किया, आपका टाइम बच रहा है. कंपनी क्या करेगी कि ओके, यहाँ पे हमारा टाइम, इस एम्प्लॉय ने हमारे 45 मिनट सेव किए, लेट्स गिव दिस एम्प्लॉय one more additional responsibility to showcase his her skills to grow the person into his career, right friends? Yes, right. Yes. ओके, तो मैनेजर भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपके कलीग्स भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे. अगर आपने कंपनी का फायदा किया, ऑब्वियसली रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ तो भी अच्छा ही मिलेगा. अगर आपने किसी का फायदा किया, डेफिनेटली सामने वाला आपका फायदा करेगा ही. ओके, वंस यू डू इट, डू दी ऑटोमेशन, ऑब्वियसली आपका जो एक्यूरेसी होती है, आपकी जो एफिशिएंसी होती है, आपका जो वैल्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है. एंड यू सिट इन अ गुड बुक्स ऑफ योर मैनेजर. कल के डेट में जब अप्रेजल्स का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है आपके मैनेजर्स की तरफ से. क्यों? क्योंकि आपने उतने आपके टाइम इन्वेस्ट करके आपने काफी सारी चीजें कंपनी के हित में अच्छी की हुई है. एंड ऑब्वियसली अगर आपने एक टीम के लिए कुछ अच्छा किया होगा, कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, तो यू एंटर योर नेम इनटू द गुड बुक्स ऑफ योर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स. एंड आपके बारे में अच्छी बातें होती रहती है, राइट? गॉसिपिंग्स होती रहती है कंपनीज में. इट्स अ जनरल प्रैक्टिस, राइट? खराब काम भी किया तो भी गॉसिपिंग होती है, अच्छा काम किया तो भी गॉसिपिंग होती है. तो अभिषेक बच्चन का एक डायलॉग है गुरु मूवी का, इफ यू रिमेम्बर, ही सेड कि लोग अगर पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करने लगे तो समझ लेना कि तुम बढ़ रहे हो, राइट? Yes. समथिंग दिस टाइप ऑफ डायलॉग वाज देयर इन गुरु मूवी. तो उसी तरीके से कि Yes. लोग पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं. इट कैन बी अ नेगेटिव थिंग, इट कुड बी अ पॉजिटिव थिंग, लेकिन
लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका पॉजिटिवनेस दिख के आता है। इमीडिएटली नहीं दिखता, लेकिन कुछ समय के बाद दिखाई देता है। एज आई हैव सेड यू कि अगर आप टाइम सेव कर रहे तो ऑब्वियसली पैसा भी सेव कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद आपको करियर में एक पाथ मिलता है ग्रो होने के लिए। देन यू कुड बी अ more employable. When I say more employable, what do you mean by it? More employable. I think we then the person is more deserving and getting more opportunities also in terms of not only to put that company, in other areas also, right? So you're more the opportunities are much more higher compared to what you were earlier, right? Correct. That's right. For example, I would just share you one example. कॉस्ट कटिंग के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। कॉस्ट कटिंग चल रही है, कॉस्ट कटिंग चल रहा है। जब भी कॉस्ट कटिंग की बात होती है तो सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है एम्प्लॉय ले ऑफ पे होता है। एम्प्लॉयज को निकाला जाता है। तो कौन से एम्प्लॉयज को निकाला जाता है? व्हाट डू यू थिंक? कौन से एम्प्लॉयज को निकाला जाता है? I think those who are not doing anything, bottom performers. करेक्ट, दैट्स राइट, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, जिसके पास स्किल सेट नहीं है, जो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको फर्स्ट टारगेट किया जाता है। एंड जो ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर रहा है, जिसके स्किल सेट बहुत अच्छे है, उसको कोई निकालेगा नहीं। सो दैट इज द रीजन आज का जो वर्ल्ड है दैट इज मोर कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू दी 90s एंड 80s व्हेन आवर फादर्स यूज्ड टू वर्क। आज का जो वर्ल्ड है दैट इज मोर कॉम्पिटिटिव। So that is the reason day on day you need to focus towards enhancing your skills, developing your new skill set so that you could be more employable and you could grow in a faster mode into your career. Okay, so coming back to the Excel, I would just show you what all things we will be doing. Okay, so as you know, this is the foundation batch. So right from enabling this developer tab into the Excel ribbons, we will be starting it out कि किस तरीके से ये डेवलपर टैब यहाँ पे एनेबल किया जाता है। फिर उसके बाद किस तरीके से हम इस VBA एडिटर पेज पे जाते हैं, यहाँ पे जो ये फंक्शंस है इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। व्यू टाइप में अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या होता है, इमीडिएट विंडो क्या होता है, लोकल विंडो क्या होता है, वॉच विंडो क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या है, प्रॉपर्टीज विंडोज क्या है, टूल बार में डीबग क्या है, एडिट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, यूजर्स फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद इंसर्ट में आपको यहाँ पे प्रोसीजर्स दिखते हैं। तो यहाँ पे सब प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर्स, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एज वेल एज मॉड्यूल्स में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम मॉड्यूल्स में कोडिंग्स लिख रहे हैं। इफ यू सी द कोडिंग्स आर वेरी सिंपल। वी हैव क्रिएटेड आवर ओन फॉर्मूला। फंक्शन मतलब फॉर्मूलाज हमने क्रिएट किया। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो हम लिखते हैं दिस आर कॉल्ड मैक्रोस, और ये जिसके अंदर हम लिख रहे हैं दिस इज VBA एडिटर पेज। ये एडिटर पेज है, और ये जो ओपन हुआ है दिस इज विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में ये एक पेज है जिसके अंदर हमने मैक्रोस लिखे हुए हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? Yeah, we are good. ओके। फिर आपने आपके ऑफिसेस में देखे होंगे कि इस तरीके से बटन डिजाइन की बटन रहता है। फिर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, राइट? आई एम जस्ट राइटिंग इट एज अ रन मैक्रो ओवर हियर। इस तरीके का बटन होता है, राइट?
आपने आपके ऑफिसेस में मैक्रोज यूज किए होंगे। Yes, we have seen tool with a different kind of shapes they have given to start or stop the tool, right? करेक्ट, राइट। तो ये बटन्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करके मैक्रोज को किस तरीके से असाइन किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रोज भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्रोज कब यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएं। इफ यू सी ओवर हियर, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक 129, 142, 143। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एनेबल्ड, एक यूजर फॉर्म ओपन हो गया। एंड बैकएंड में यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सेल फाइल भी ओपन है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक यूजर फॉर्म दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर करता हूँ, enter data, are you sure you have not made any error? This is a warning. Yes, we haven't made any error. So you can see over here backend में हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, जो हमारी एक्टिव वर्कबुक है उसके अंदर एंट्री हुई है, दिख रहा है। Yes, sir. तो ये हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच। आप लोगों ने MSc ज्वाइन किया था, एनी वन ऑफ यू? No. यस किया था। ओके, तो Yes. Yes, yes. MSc में आपको बताया गया होगा राइट, सीपीयू को किस तरीके से ऑन किया जाता है, राइट फ्रॉम दैट वो स्टार्टअप होता है। उसी तरीके से Mm-hmm. जब आप VBA फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो डेवलपर टैब एक बटन मतलब एक सीपीयू का बटन किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, उसी तरीके से डेवलपर टैब है कि इसको किस तरीके से एनेबल्ड किया जाता है एक्सेल रिबन्स पे। ये यूजुअली एनेबल्ड नहीं रहता है, आपको एनेबल करना पड़ता है इसको। तो ये किस तरीके से एनेबल किया जाता है थ्रू कस्टमाइज रिबन्स, वो हम वहां से ही इसकी शुरुआत होती है क्लास में, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है यहाँ तक? दिस इज No. दिस इज द एडिटर पेज। ये जो यूजर फॉर्म यहाँ पे हमने ओपन किया था उसका ये VBA एडिटर पेज में ये इस तरीके से दिखता है। तो जब आप ये एंटर बटन पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कोडिंग्स देख रहे होंगे, किस तरीके से कोडिंग्स लिखा हुआ है। यूजर को लगता है कि एक सिंपल बटन क्लिक करने पे डेटा एंटर हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट सो इजी राइट, उसके लिए काफी कुछ लिखना पड़ता है। तो ये जो लैंग्वेज है ये हम सीखेंगे ये किस तरीके से लिखी जाती है। इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी। हर एक चीज का एक लॉजिक होता है, हम आपको लॉजिक बताएंगे कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर। सो एनी क्वेश्चंस टुवर्ड्स इट? ये सब हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा ना सर? यस यस, स्टेप बाय स्टेप, राइट फ्रॉम राइटिंग द नेम ऑफ द मैक्रो, ये जो नाम ओके। दिख रहा है, राइट फ्रॉम दिस कि आपको ये सब वर्ड ही की यूज करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं लिखा, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेडिकेटेडली अगर आपने मुझे हफ्ते के 3 आवर्स दिया एंड थोड़ा सा आपने सेल्फ लर्निंग किया, जो भी हमने संडे के बैच में सीखा है, मार्क माय वर्ड्स, 4 months डाउन द लाइन यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट योर ओन कस्टमाइज कोडिंग। लेकिन मुझे आपके तरफ से 100% एफर्ट्स चाहिए। सिर्फ 4 महीने की बात है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग बेटर आउट ऑफ इट। ओके, ओके। या क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है राइट।
यस फ्रेंड्स, एम आई राइट? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, Yes. तो सिर्फ थोड़ा सा Yes. डेडिकेशन से थोड़ा सा फोकस्ड रहो। 4 महीने का ही सवाल है। गिव योर 100% into this 4 months. Definitely you will come out with the shining colors. Okay, so let's move on to the next part. So here is the course information. So हमारा जो बैच कोड है that would be HPVP005. It would be a 4 months course. It would be a Sunday batch, that is 4:45 p.m. to 8 p.m. Batch जो ये start होगी that would be somewhere around 21st of April. फीस जो है 9,000 रुपीज है। अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो आपको ये पूरी फीस जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे इट आउट, सो दैट आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स somewhere around 8,100 would be the fees you have to pay at the time of admission. एंड अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेते हो तो आपको 21 अप्रैल के पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर करना पड़ेगा। दैट वुड बी समथिंग अराउंड 4,500 रुपीज एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है आपको नेक्स्ट मंथ 21 मई के पहले पे आउट करना पड़ेगा। दैट वुड बी 4,500 रुपीज। आप में से कोई है जो इस फीस को आपकी कंपनी से रीएम्बर्स करना चाहेगा? मैं हूँ सर। रसिका, फाइन। तो रसिका, यस। आपको 9,000 प्लस 18% जीएसटी चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है? ओके, मतलब रिएम्बर्स करना है तो जीएसटी पे करनी पड़ेगी। यस, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एंड आपको रजा सर को नोटिफाई करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि यू विल बी रीएम्बर्सिंग दिस फीस फ्रॉम योर कंपनी, सो दैट अकॉर्डिंगली रजा सर उसका प्रोविजन करेंगे एंड आपको टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। So 9,000 plus 18% GST, that comes something around 10,000 plus कुछ तो भी होता है वो, ओके। ठीक है? So you need to make sure कि आप रजा सर को टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्म कर रहे हो, वरना बाद में ये बहुत इशू हो जाता है। तो your fees will come something around 10,620 including 18% GST, ठीक है? I would request you to please note down this batch code and once you pay the fees, गूगल पे वगैरह जब भी आप कर रहे होंगे उस टाइम पे बैच कोड लिखना। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप ये बैच कोड लिखते हो तो रजा सर को नोटिफाई मिल जाता है कि आपने किस कोर्स के लिए पेमेंट किया हुआ है, सो दैट उनको एंट्री करने में ईजी दिखता है, ठीक है? वरना what would happen, he will start communicating with you कि for which course you have registered, for which course you have paid the fees, तो unnecessary काफी टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप फीस पे करते हो तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आप ये बैच कोड लिख दो वहां पर, ठीक है? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू प्लीज नोट डाउन दिस बैच कोड। If done, just let me know. I will move on to the next slide. Done. Okay. So this is the next slide, wherein these are the payment modes. There are multiple payment modes over here. Okay. So a strong recommendation to do the payment via Google Pay itself. इसके पीछे रीजन बताता हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो आपको ये वाला लिंक यूज करना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ये लिंक यूज कर रहे हो तो आपको गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, दैट इज समवेयर अराउंड 3 to 4%. So and this gateway charges is applicable to both credit and debit card if you are paying through this link. So you need to make sure कि try to avoid using this link and pay the fees towards Google Pay and Phone Pay only. Note down this number over here, or else you can do the IMPS or NFT to this bank account. You can note down this
details over here. And as I have said you, if you are reimbursing the course fees, 18% GST will be applicable on course fees. So please take a photocopy of it or a screenshot of it so that आपको easy रहेगा पेमेंट करने के लिए. आई होप आप लोगों ने इसका फोटो या स्क्रीनशॉट लिया होगा. Just Yes, confirm sir. these things. Okay, fine. Okay. So again, I'm going back to the AFCKS website because रसिक किसने लेट ज्वाइन किया था? रसिका ने लेट ज्वाइन किया था, भरत एंड गणेश. So again, I'm taking you back to the AFCKS website. गूगल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे AFCKS लिखना एंड आपको यहाँ पे AFCKS टेक्नोलॉजीज का होम पेज दिखाई देगा. वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, इस तरीके से आपको पेज दिखाई दिया होगा. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप दिखाई देगा टेलीग्राम. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड हेल्प द पीपल इनटू द ग्रुप टू रिजॉल्व देयर क्वेरीज. अगर आप लोगों को हेल्प आउट करते हो उनकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए, इसमें ना ही आपका स्किल सेट डेवलप होगा, as well as you would be coming to know how what are the challenges that the users are facing in their day to day life. बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड एज वेल एज हमारी जो कोर्सेज में एग्जाम्पल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. इवन दो दैट वुड बी द डमी डेटा, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं. तो थोड़े से आपने जो भी कोडिंग्स आपने सीखी हुई है, थोड़ा सा उसमें आप अगर आपने आपके हिसाब से मॉडिफाई करके अगर आप आपकी कंपनीज में डायरेक्टली यूज करोगे तभी भी चल जाता है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल एज अगेन अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ज्वाइन दिस जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रुप वेयर इन हमारे ऑलमोस्ट 4K प्लस यूजर्स है इस ग्रुप में, जहाँ पे कंटिन्यूस जॉब पोस्टिंग आती रहती है. एंड इफ यू थिंक कि जो भी जॉब पोस्टिंग आई हुई है दैट इज सुटेबल फॉर यू, यू मे इमीडिएटली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? No, sir. ओके, देन होम पेज पे राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखाई देगा आपको. इस लॉगिन के एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट लॉग इट आउट. इस तरीके से आपको होम स्क्रीन दिखाई देगा. लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स का लॉगिन होता है. तो यू नीड टू, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो यू नीड टू फॉलो दिस गाइडलाइंस. ठीक है, आपको ओटीपी के लिए रजा सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा एंड ओटीपी लेना पड़ेगा एंड आप आपका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो. दैट इज फॉर ओनली फॉर वन टाइम, यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद रजा सर. ठीक है, वंस आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो गया तो आप यहाँ पे लॉगिन करके आपके मोबाइल नंबर से इस तरीके का आपको होम स्क्रीन दिख जाता है. तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिख जाएगा जो भी है. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने का मेथड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. जो भी मैंने वो पीपीटी में बताया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, फिर अगर आप फीडबैक देना चाहो तो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो. फिर यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है. तो जो भी कोर्सेज के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको उस कोर्स का नाम दिखाई देगा. यहाँ पे प्लस का बटन है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स दिखाई देंगे. तो यू कुड डाउनलोड द नोट्स ओवर हियर एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस. ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है यहाँ तक टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस वेबसाइट स्टूडेंट्स लॉगिन के लिए? यस फ्रेंड्स? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so I would request you to please ask me the question. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई विल हेल्प यू आउट इन
answering it. Any questions you may ask me. एंड एक चीज ध्यान में रखना गाइस, मैं हमेशा मेरे बैच में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बेशरम बनो. Why I'm telling them to be a shameless person? Because if you are a shameless person, you will be asking the questions. And कभी ये मत सोचना कि मेरा क्वेश्चन कितना सिली है. नो, आपका जो सिली क्वेश्चन है वो किसी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. सो नेवर थिंक कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इट माइट बी अ वेरी सिली क्वेश्चन. अगर आपने मुझे एक चीज 10 बार भी पूछी ना, none of a trainer into AFCKS will get irritated towards the questions that you are asking. ठीक है, that is the reason always we tell our students to be this shameless person in terms of asking the questions. क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतने आपके क्वेरीज सॉल्व होंगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग. Okay, so I would request you to please ask the question if you have any sort of doubts or queries. Yes, sir. मेरा एक्सेल का स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yeah, we can see. Okay, great. Okay, I have couple of questions. I'll cover it up. Yes, I'm yes, not sure please. if. Okay, the first is like we discussed. Okay, it's a VBA and more involving coding. But it's mostly Excel based, right? So how well versed we need to be with Excel, right? We have to be aware of the formulas like we look up if and all those things. So if I talk about on a scale of 0 to 10, how well versed we should be, or do we need to first go with the advanced Excel course to start this training, or it's okay if we know basic Excel? Okay, now I will reverse this question towards you. If I ask you how much you would be rating yourself into an Excel, then how much you would be rating? See, I will be rating myself on 5 or 6, not at that 8, 9, only on the mid of the scale. Okay, not at the on the lower side also, not at the higher side also. That would be more than enough for learning this thing. Because I would be telling you the reason. I think you hold 10 years of experience. Yes, yes. Okay. Out of the 10 years of experience, I guess you might be working on Excel dedicatedly for almost 7 years. Not 7 years, but yes, at least 5, 4, 5 years. Yeah, Yes. somewhere around. Okay. So that is the ample years of experience, and you might be understanding the things that I will be explaining. Okay. 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 So don't be worried about it. I hope you might be using if function, if Yes. formula, right? Effectively, you might be able to use it, right? Right. Right. Don't worry about it. You can manage it. Okay. Okay. And one more questions like uh, we are joining through an online class. Okay. So can we attend a classroom also if we want, or it's like that? If we have selected only online, then we continue to do online. Oh, For a so yeah. Sorry. I have missed this one point. Thanks for reminding me. Yeah. This batch will be online plus offline. If you think you could join the online batch, you are surely welcome. You can join the online batch. As well as if you think due to some reason you could not join the online batch, you can join the offline batch too. Right. Okay. It's an online and offline batch too. Okay. And we need to inform you in prior, right, that we are coming today in classroom because of so and so issue, right? We need Yeah. to. You may inform me, or else you can directly come down to classroom also. No worries. Okay. 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 Okay, because see, informing is always a better option, because if you see, if no one is coming to the class, then it's not good, right? For in terms of the trainer's prospect, at least there should be one student. If we have a facility of offline, then at least one student should be there over here.
Okay. Yeah. Thanks. Yeah. So you can join offline as well as online batch. No worries. Yes, sir. So any other question? Sir, for offline classes, do we need to bring our laptop or we have a setup over there in the class? A strong recommendation would be if you have a laptop, you may carry it. Okay, if you don't have a laptop, then we already have a arrangement over here. But a Yes. strong recommendation is if you have a laptop, then you may please carry it. The reason I will tell you is it will help you to note down the notes. Yes. 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 Sure. Sure. Okay, Yeah. yeah. So any other questions? Yeah. And just one more thing. I'm Yeah. so sorry. I'm asking back to back. And no worries, no worries. See, what I have told you, you should be a seamless person while asking the questions. Otherwise, जिसने शर्म की उसके पोते करम is some right. There is a Okay. slogan over there. Yes. 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 Yeah, you may ask the Okay. question. Yeah. So this is a foundation batch, right? A level one, we can say, Yes, right? So similar, we will be having a complex or level two kind of batch also, right? Where yes, we will enhance our further knowledge. yes. We do have a see, as I have told you that ms in all the ms office applications this VBA works. So similarly, if you go towards the advanced level of courses, then over there we will be teaching you how to connect excel to the outlook, excel to the powerpoint, excel to the SQL server. Okay. Okay, Okay. all that advanced level things means uh, application to application how you can work on all those things will be taught into the advanced level of courses. But before that, you should be very good into the foundation level. Okay. And do we get any participation certificate or certification of completion? Okay, this person has completed foundation one level one batch for VBA from a CKS, something like that. Yes. See, you will be getting two sorts of certificates. One is after the completion of the course, we will be having the assessment test. If you Okay. clear that assessment test, then you would be getting a certificate. Okay, I would just show you the certificate how it looks like. Just a second. Mm, just give me a second. Okay. So this is how the participation certificate will look like. Letter of completion. Okay, letter of completion would be getting to all the students who had 90 plus attendance, 90% plus attendance. Okay, so you will be getting this sort of letter of completion. Okay, this is the sample. Are you able to see my screen? Yes. Yes. Okay, so this is how the letter of completion will look like, and this is how. Just a second. Yeah. This is how the certificate will look like. Are you able to see my screen? Yes. Yeah. So this is how the certificate will look like after clearing your the assessment test. You will be getting certificate in this way. Okay. And if you are not able to clear the test, then also you will be getting the letter of completion. But for the letter of completion, the attendance should be 90% and above. Okay. Any other sort of questions? Yeah, I got my answers. Thank you so much. Okay. So anybody else would like to ask any sort of questions? From my side is all clear, sir. Okay. One more thing I would like to share with you. Just a second. Okay. I will just show you how our notes would be like.
See, if you see over here, we have written a single line of code over here, but if you see, we have given the proper notes over here. What is this function will be doing? What this array function will be doing? If you see over here, we have written in this example, we have demonstrated use of array function. Array function will help you to update the header name in your data set. For example, user want to update header name, that is product Jan Feb and so on. So instead of writing your code as range A1 equals to product range B1 equals to Jan and so on, you may use below line of code. This will help you to write header name in horizontal format. Note below array function will not work for vertical data set. So what will be working for vertical data set? So over here, therefore to use the array function for vertical data set, we have to use transpose function. Transpose will help you to convert horizontal data to vertical and vice versa below line of code. Prefer below line of code. So this is how you will be getting the notes in proper detail and in descriptive format, so that whenever you will be referring to this note, immediately you could recall what were the things that we have covered into this example 69, example 70. If you see over here, these green color sentences are the notes. These are called comments. So what is this RGB? What is this number? Okay. So these all things you will be getting in our each and every notes. What we have done it over here. In this example, see how we have written the code, and in this example, how we have written the code. Using data types, variables. Okay. We will be teaching you how to use data types, how to use variables. So in this example, you can see the straightforward comparison that we have written this code without data types and variables, wherein we have written the code in the form of data types and variables. What is the difference between the data types and variables? When to use this with statement? Each and everything we will be teaching you. Then what is the difference between delete and clear content? Okay. So any sort of questions towards the notes point of view? Yes, friends. Any sort of questions? No, sir. Okay. So we have basically we have two types of data types. One is numeric data types and other one is non-numeric data type. So we will be teaching you how to use the numeric data type and when to use the numeric data type, as well as when to use non-numeric type and in which scenarios we need to use it. So each and everything will be covered into this foundation batch. So just be tension free and just be attentive towards the class. One expectation from my end would be that even though you will be joining online batch, just be attentive towards the class. Okay, Yes, sir. fine. So if you have any other questions, then you may openly ask me, because I have done from my end. So any sort of questions, just let me know. Yes, sir. One question from my side. Yeah. सर फिर हम लोग यहाँ इसमें मैक्रो बना सकते हैं क्या सर? मतलब इस कोर्स के अंदर मैक्रो बना के रन कर सकते हैं क्या प्रैक्टिकली? Yes. These are all practical examples. ओके. अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड एरे हमने यूज किया हुआ है. ओके, तो रैंड एरे रैंडम डेटा क्रिएट करने के लिए यूज होता है. यहाँ पे आप देखोगे हमने फिल सीरीज यूज की हुई है. यहाँ पे आप देखोगे हमने एक्सेल फिल मंथ्स यूज किया हुआ है. एंड इफ यू सी ओवर हियर हमने इस तरीके का डेटा बनाया हुआ है. इवन दो दिस आर रैंडम डेटा, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. यहाँ पे आप देखोगे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है थ्रू दी कोडिंग.
जैसे ही यहाँ पे हम चेंज करते हैं मार्च, ओके, प्रोडक्ट 5 मार्च का आंसर है 241। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए 241 आ गया, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, yes. तो ये बटन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ओके, फिर किस तरीके से आउटपुट निकलता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख रहे Uh, होंगे फॉर्मूला बार में यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, यानी ये बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो आई हैव गॉट माय आंसर। प्रोडक्ट 1 मार्च, मार्च का प्रोडक्ट 1 584, यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं है, फिर भी मुझे आंसर आ रहा है। तो ये आंसर कैसे आ रहा है, दैट थिंग वी विल बी टीचिंग। ये सेल को कलर कैसे किया, एवरीथिंग वी विल बी टीचिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटीरियर डॉट कलर हमने यूज किया है। दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। consolidation level macro are we covering in this class, यस sir? यस Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you for confirming. ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू कि हमारा जो कोर्स का पैटर्न होगा, इट विल बी लाइक लो मीडियम हाई। आप वीडियो गेम खेलते होंगे, मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलते होंगे, गेम्स के लेवल होते हैं राइट, लो मीडियम हाई। Yes, sir. Yeah. अपना कोर्स का पैटर्न सेम उसी तरीके से होगा। स्टार्टिंग में जब आप अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम एकदम बेसिक लेवल पे होंगे। जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करते जाएगा वैसे वैसे हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। Yes, correct, sir. ओके, तो अपना कोर्स का पैटर्न वही है, लो मीडियम हाई। तो इफ यू सी ओवर हियर, हमने पहले सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड लिखे थे, फिर ये 2 लाइन ऑफ कोड को हमने किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया अलॉन्ग विद दी अदर थिंग्स। फिर उसी को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने रैंड एरे वर्कशीट फंक्शन रैंड एरे यूज किया, यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन यूज किया, फिर उसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज किया। यहाँ पे देखो हमने कॉपी पे स्पेशल वैल्यूज नहीं किया। सेम एग्जांपल को हम किस तरीके से 2 अलग-अलग मेथड से लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद इसी को हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बेसिस पे किस तरीके से लिखा हुआ है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद डिलीट, क्लियर कंटेंट किस तरीके से यूज़ होता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो हमने सीधा-सीधा सेंटेंसेस लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो लिखने का तरीका ही चेंज हो गया। सेम चीज़, क्लियर कंटेंट, यहाँ पे भी हमने क्लियर कंटेंट बोला, यहाँ पे हमने करंट रीजन यूज किया, यहाँ पे हमने पूरा रेंज सेलेक्ट किया, वेरिएंट हमने यहाँ पे पूरा करंट रीजन सेलेक्ट किया। फिर करंट रीजन होता क्या है, ये चीज हम आपको बताएं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोडिंग के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक हार्ड कोडिंग और एक डायनामिक कोडिंग। इफ यू सी, आई हैव गिवन अ नोट्स ओवर हियर। In example 073, we have written range A1 to M6, which is a hard code range. And in this example we have used range a1 dot current region, which is a dynamic coding. अभी इन फ्यूचर अगर M6 के जगह पे मेरे पास कुछ अलग रेंज आ गया या फिर बढ़ गया या कम हो गया, तो मेरा एक कोड तो यहाँ तक ही एग्जीक्यूट होगा जितना मैंने रेंज दिया हुआ है। वेर इन अगर मैं ये कमांड यूज करता हूँ तो मेरा जो डेटा सेट है वो कम हो या ज्यादा हो, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ के कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक कोडिंग। तो हम आपको हार्ड कोडिंग क्या होता है, डायनामिक कोडिंग क्या होता है, वो दोनों का डिफरेंशिएट भी बताएंगे। एंड एवरीवेयर यू नीड टू बी डायनामिक, कि हार्ड कोड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ड कोडिंग का लिमिटेशन क्या होता है कि जितना आपने बताया है उतना ही काम करेगा वो। कल के डेट में अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो मैं ऐड ऑन नहीं कर सकता हार्ड कोडिंग, करेक्ट। यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है करंट रीजन हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी टू सेलेक्ट द डेटा बेस्ड अपॉन द रेंज। अंडरस्टूड।
Yes, guys. Yes, sir. Yes. डेटा वैलिडेशन आप सब लोग यूज करते ही होंगे, आई होप सो। तो यहाँ पे देखो हमने डेटा वैलिडेशन का कमांड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया हुआ है उसका पूरा कमांड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि इनपुट टाइटल भी आ रहा है, इनपुट मैसेज का उसका मैसेज भी आ रहा है। अगर कुछ गलत लिखी एरर भी आ रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। So we will be teaching you all those things. So any sort of queries, questions? Yes, friends. No questions from my side. I think I'm good. Okay, that's good. So I have also done from my end. Again, a strong recommendation. If you haven't taken the screenshot of this payment mode, I would strongly recommend you to please take the screenshot of this payment mode or a photo of this payment mode, and also note that our batch code is HP EV 005. This is our batch code. Okay, so whenever you are making a payment, make sure that you are updating this batch code so that Raza sir will come to know that for which batch you have made the payment, so that it would be easy for him to make the end. And if you are planning to reimburse the course fees, please let us know well in advance before the admission, so that Raza sir will be making the provision accordingly, and he will be issuing you the tax invoice with 18% GST. So 9,000 plus 18% GST would be applicable for the tax invoice. If you are willing to get the tax invoice, then 9,000 plus 18% GST will be applicable. So the total would be somewhere around 10,620 will be the batch fees. Okay. Okay, friends. Okay, sir. Okay, so if you don't have any sort of questions, so should we end the call? Uh, Sir, one Yes. more question. Yeah, please. When we will Can start the go. batch? See, we have planned to start the batch by 21st of April. Okay. If due to some Okay. issue, if there are some sort of delay, then we will be starting it by May 1st. But this is the current planning. Okay, sir. Okay. Okay. Okay, sir. Okay, friends. So I would strongly recommend you to please pay out, take the admission uh, as soon as possible, so that we could start the course by 21st of April. Okay, if there are some issues, then it might get start by first week of May, but that would be the final date, first week of May. Okay, and everything is as per the plan, then this is the date that the batch will start. Okay, friends, any other question? And if participants are less, I hope batch will not get cancelled, right? No, no, no. Batch will not get cancelled. Okay. It might get postponed to 1 2 weeks, but batch will not get cancelled. Okay. Okay. Okay, friends. So, any other question? No, sir. Okay. Okay, then we will end the class over here. Thanks for you the thanks for your participants. Okay. Bye, guys. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Okay, bye. Bye.